Good evening, guys. A very, very good evening to all of you. How are you all doing? Welcome to the part 8 of the Formula Revision series, Formula Firestorm for CRE subject. And in this part, today we are going to talk about the multiple reaction system. Multiple reaction system, there we will discuss the kinetic equations as well as the designing of these reactions. So just let me know before we move ahead. Am I audible? Audio, video, everything is clear? Hello? वीडियो क्लियर है आप सभी को? Okay, wonderful. So till now we have covered topics in the previous 7 parts. Today we are going to cover up the multiple reaction system. We'll try to complete this in today's part only. Otherwise, we will complete this in the next part tomorrow. Okay, so let's start our discussion. Introduction. Multiple reaction system, and I hope all of you are clear with this. Multiple reaction systems are those in which more than one rate equation exists. Okay, the reactions in which we have more than one rate equations, they are the multiple reaction system. And you know that in general we can classify these multiple reactions in 4 categories: series reactions, parallel reactions, complex reactions, and reactions. As per your course, we have to deal with these two only. And for as per your course as well, multiple reaction systems are in your syllabus for homogeneous and CVRS. Homogeneous and CVRS reaction system. ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज रिएक्शंस की. I hope the things are clear to you. Series reactions are those in which reactions occur in consecutive steps where the desired product further
converts into undesired product simultaneously. Okay. For example, A is the reactant, it converts into R, the desired product, and further this desired product R is decomposes or converts into some undesired product S. So यहाँ पे आपका R हमारा desired product है, and I hope you know that desired products are those for which you are doing the reaction, and undesired products are those which you never wanted to have but is still getting formed. So here you can see two reaction steps are there. For first reaction step, let's say rate constant is K1, for second it is K2, and the order is N1 and N2 respectively. So here if you have to write the rate equation, so you know rate of reaction in terms of disappearance of A minus RA will be K1 Ca power N1. In terms of formation of R, if you write, it will be like K1 Ca power N1 minus K2 Cr power N2. And for S, it will be like K1 Cr power N2 Rs. Okay, we have already discussed in the first part how to write the rate equations in the first and second part. I hope these things are clear to you people. तो यहाँ पे आपके सीरीज रिएक्शन में मल्टीपल केसेस आते हैं, ठीक है? तो we will discuss those cases, their kinetic equations, and as well as their designing, how we can do the designing for series reactions. तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर series reaction. Which are irreversibles. So let's say A gives R gives S, rate constant is K1, K2, order is 1, 1. Okay, so you know how to write the rate equations and then find out the kinetic equation. And all these things are for CVRS. So you know for CVRS, rate of reaction in terms of A, disappearance of A can be written as minus dCA by dt, which will be from power law equal to K1 Ca. And you can solve this. You know how to solve the kinetic equation. We have discussed that already. So I am writing directly. On solving, we will get Ca is equal to Ca naught e to the power minus K1t. Similarly, for R, you can write be like dCr by dt is equal to K1 Ca minus K2 Cr. Now, if you have to solve this differential equation, so you know how to approach the things. Let me do it, write it like this, you know, for R. This was for A. You know, dCr by dt. This K2Cr you can take on left hand side. It will be like K1Ca. And here, you know, Ca is the function of time. So you can also write it as dCr by dt plus K2Cr is equal to K1 Ca naught into e to the power minus K1t. Okay, so you can see this is first order linear differential equation in the form of dy over dx plus py is equal to q as a function of x. For such reactions, such equations, you know that mathematics, the solution will be like I into if, y into if equal to integration of q into if with respect to x plus c1, the integration constant. And you know how to solve such equations. Okay, if is the integration factor. So here if will be exponential of p dx. So for the given case, if you write the values,
P is equal to K2, as you can see. X means P. So your IF will be equal to e to the power K2T. Correct? This derivation is important. That's why we are doing it. So that the other stuff, the other cases you can easily understand. So your solution Y is CR into IF, that is e to the power K2T, is equal to, if you put the values in this equation, integration of Q is equal to K1 into e to the power minus K1T multiplied by IF, which is e to the power K2T dt plus C. So here, after solving this integration, you will get K1 e to the power K2 minus K1 times of T divided by K2 minus K1 plus C1. You can see only one integration constant is there. So you can use initial condition. That is at reaction time t equal to 0, concentration of R will be 0 because that is the desired product. And usually we do not introduce R in the reaction system. But if there is a case, some R is also entering, this CR will become CR naught. Okay. And then you can rearrange the things. But for now, we will take it as 0. So if you put these values, you will get C1 equal to e to the power 0 is 1. Left hand side will become 0. So C1 will be minus K1 Ca naught upon K2 minus K1. And now if you put these values here, the C1 value, ultimately you will get CR is equal to, after rearranging and everything, I am writing directly. It will be something like K1 Ca naught divided by K2 minus K1 times of e to the power minus K1T minus e to the power minus K2T. So this is the kinetic equation for R. Now similarly for S, if you want, you have two ways. Either you can use the kinetic equation approach, the differential equation approach. That is, RS is dCs by dt. That is equal to K2 CR. So here you can put the value of CR and integrate and solve, where CR will be this. And you can solve it. So ultimately you will get CS is equal to Ca naught times of 1 minus K2 divided by K2 minus K1 into e to the power minus K1T plus K1 divided by K2 minus K1 into e to the power minus K2T. This is the kinetic equation in terms of S. Or you can say these are the concentration profiles. You can also use the word concentration profile. यहाँ पे अगर in general आपको लिखना है तो for the reaction A gives R gives S, you will get K1 K2, order is 1 1, concentration profiles, or you can say kinetic equations. For A मैं एक साथ लिख देता हूँ. For R, and for S,
These will be the concentration profiles or kinetic equation. And if you will try to draw these concentration profiles on a graph, like between concentration versus T, if you try to draw a graph, so here for A at T equal to 0, Ca equal to Ca naught. Profile will be something like this. For R, it will be something like this. And for S, it will be like this. Don't look at the endpoints, doesn't matter. Endpoints obviously will depend on the value of T. You can understand logically if this reaction occurs for a very long time, like you can say infinite. So physically you can understand all the A will disappear, all the R will disappear, only S will be there. है ना? So Ca, Cr both will become zero in infinite time. So ये at any time T हमने ये concentration profile draw की है. And as per this profile you can see, अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ that all these equations are valid when Ca is equal to Ca naught, Cr naught is 0 and Cs naught is also 0. Okay, and you can understand if Cr naught is there, the this equation of R, the curve of R, graph of R will start from some value on y-axis because Cr naught will be non-zero. Similarly, S curve will also start somewhere on this because Cs naught will be non-zero. These are the variations you can understand, but ultimately the nature of the graph will be same. Okay, so that's how we can do the things for सीरीज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज रिएक्शन. अब इसकी डिजाइनिंग की हम बात करें, डिजाइनिंग से हमारा क्या मतलब है? The designing of series reaction means the point at which you will stop the reaction. Okay, and designing is all about to maximize the product or to minimize the inputs. Maximize the output or minimize the input. What is the output here? Desired product R. So either your Cr should be maximum or the inputs should be minimum. That is A. That is the volume of reactor. ठीक है. अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर की हम बात करते हैं, बाद में करेंगे. अभी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है, फॉर मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम एज आई टोल्ड यू, here you should know, for multiple reaction system the design characteristic is the product distribution. Here we will not look at conversion like before that in single reaction system. We were dealing with single reaction system where only one rate equation was there. है ना? अगर किसी को डाउट है तो ऐसे भी समझ सकते हो, like A gives B plus C. This is the reaction. If minus RA equal to K Ca power alpha. So you know that RB will also be K Ca power alpha. RC will also be K Ca power alpha. So you can see only one rate equation is there. है ना? So this is what you call single reaction system. But in case of multiple reaction system, we have more than one rate equations. Like you can see in this example, in this series reaction. For A, this is the rate equation. For R, this is the rate equation. For S, this is the rate equation. So different rate equations are there. You can see the nature. Equal थोड़ी है ना? So I hope you are understanding these cases. We don't look at the conversion. We don't care about the conversion of A. We care about the product distribution. Okay, to decide the extent of reaction, to design the reaction. ये भी मैं लिख ही देता हूँ. In single reaction system,
The design characteristic is conversion of A, or you can say reactant conversion. To have a symmetry, I am writing reactant conversion. Otherwise, conversion is only associated with reactants only. But थोड़ा एक clarity रहेगी. Single reaction system, reactant conversion. Reactant conversion. Multiple reaction system, product distribution. Okay. So for series reactions, the design parameter is maximum concentration of desired product. Okay. So like if you look at the graph, the graph was this for the reaction. Suppose A gives R gives S, K1, K2, order is 1, 1. For A at T equal to 0, it was CA0, decreasing exponentially. For R, it was something like this. For S, it was something like this. So you can see for CR will be equal to CR max. This is what we want. Where? At this point. Okay. Now don't go in those details. So CR max is greater than CA0 or less than CA0, how it is possible and all. हम उन सब चीजों में नहीं जा रहे. It is just a nature of the curve which is important. Okay. Graph में यहाँ पे इतना सब वो आप whenever you will draw, obviously you will get the exact form. But I am talking about the nature only. ठीक है. And don't look at the final points also. कि sir CR is less than CA or equal to CA कैसे possible है at this side. All I have already told you concentration depends on T. So at what time, up to what time you are drawing the values, that depends on that thing. ठीक है, हम उन सब से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है CR max है. So you can see CR is maximum at this point. And this is the point. Here you can say this is the reaction time T. Let's say T max. Okay. So here you can understand. If I conduct the reaction, if I stop the reaction before T max, then CR will be less than CR max. Similarly, if I stop the reaction after time T max, again you can see CR will be less than CR max. I hope you are understanding these things. है ना? For CR max, what is important? For CR max, it is important that reaction time T should be equal to T max only. Okay, means reaction should stop at this moment. And I know that if reaction I stop at this point, then CR will be maximum. तो इस टाइम तक ही हमें रिएक्शन को कंडक्ट करना है. Okay, we will conduct the reaction at this time T max only. Now the point is, how can I find out the value of T max and CR max? That is very easy. So see this reaction. We want CR max. है ना? तो what is CR? You know CR is equal to K1 CA0 over K2 minus K1 times of e to the power minus K1T minus e to the power minus K2T. मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे क्वालिफाई करना है. प्लीज गाइड. अच्छी बात है. सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आई वुड सजेस्ट मैथ, एफटी, पीसीआरई, पीडीसी. बस ये 4 सब्जेक्ट कर लेना. ऑलमोस्ट 45-50 मार्क्स की वेटेज है, क्वालिफाई हो जाए. एंड दीज आर स्कोरिंग.
And if you want to score more, so I have already made a video. You can check on our channel. The title was something like Exposed Gate 2025 Trends. ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं एक बार शेयर कर दूंगा. यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन चैनल. दैट इज गेट विद एस. तो वहाँ पे मैं एक बार शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना, नहीं तो आप चैनल पे भी फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, लाइव सेक्शन में जाके. एनीवेज, तो वापस आते हैं पॉइंट पे. तो यू गाइस नो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम, व्हाट वी डू for CR max, you know that the first derivative should be equal to 0. From there, you will get the optimum value of independent variables. And then you put this value of optimum independent variable in the second derivative. And if second derivative is positive, then it means it is minimum. And if it is negative, then it will be maximum. है ना? Maximum independent or minimum independent value. You know all those terms. Basic math. तो यहाँ पे देखते हैं. To differentiate this, and put it equal to 0, and the moment you will equate this to 0, you know this t will become t optimum. ठीक है, or I can say optimum time. तो you can solve these things. ठीक है, I hope you can solve it. इसमें कोई ज़्यादा बड़ी drill नहीं है, simple math है. On solving this, you will get t optimum, or you can say t max, that is equal to 1 upon k2 minus k1 times of ln k2 by k1. Okay, and here when you will put this value of t optimum, वो टी ऑप मैक्स ही होगा. आप सेकंड डेरिवेटिव में इफ यू विश यू कैन ट्राई, अदरवाइज नो नीड. ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ टी ऑप्टिमम हियर एंड यू विल गेट सी आर मैक्स. तो मैं आपको लिख देता हूँ फॉर दिस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज रिएक्शन, टी मैक्स इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन k2 minus k1 times of ln k2 by k1. Okay, and if you wish you can also write it as 1 upon k ln. ठीक है, इसके लिखने का क्या लॉजिक है? देखो कुछ नहीं है, सिंपल. LMTD आप लोग पढ़ते हो, लॉग मीन वैल्यू ऑफ एनीथिंग. तो लॉग मीन क्या होता है? सपोज x का x2 minus x1 divided by ln of x2 by x1. So mathematically, if you look, this value is something like this: k2 minus k1 divided by ln of k2 by k1. तो इसे हम k ln बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज लॉग मीन रेट कांस्टेंट. नो, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स. ठीक है, और यहाँ से आपका सी आर मैक्स आ जाएगा सी ए नॉट टाइम्स ऑफ k1 upon k2 whole power k2 divided by k2 minus k1. करेक्ट, दिस इज हाउ यू विल गेट द थिंग्स. तो अब ये आप ड्राइव करना सीख लो या इक्वेशन लिखना सीख लो, बस इक्वेशन पता होना चाहिए. And you should know that the most important thing, that these equations are valid only for batch reactor and plug flow reactor. ठीक है, आप बोलोगे सर तो काइनेटिक इक्वेशन, इसमें बैच रिएक्टर पीएफआर कहाँ से आ गया? If you use the design equation of batch reactor, if you use the design equation of PFR,
Same thing will be there for the same reaction. When you will try to rearrange and do the same process, you will get T max, tau max, CR max. ठीक है, बैच रिएक्टर के लिए T max होगा, PFR के लिए tau max बन जाएगा. That's it. है ना? But why I am saying so? Because you know that for CVRS, the design equation of batch reactor, design equation of PFR and kinetic equations are analogous. That's why this is same as that of for batch reactor and PFR. MFR के लिए अलग होती है, तो MFR के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ. तो सपोज हमारे पास अगर MFR है, मिक्स फ्लो रिएक्टर, रिएक्शन आप दे रहे हो, आउटलेट में आपको ARS मिल रहा है, स्पेस टाइम इज सपोज टॉम, या फिर टॉ ही बोल दो, बस काफी है. ठीक है, तो इन केस ऑफ MFR यू गाइस नो दैट mole desired equation, if you do the mole balance in terms of A, so it will be tau is equal to Ca naught minus Ca over minus Ra. You can put the values of minus Ra, that is K1 Ca. So after rearranging this, you will get Ca is equal to Ca naught over 1 plus tau times of K1. अब R के लिए अगर लिखनी है तो यहाँ समझना, this is very important. That's why I am discussing this, because mole balance is the key in reactor CR. If you know the mole balance, how to write mole balance, trust me, 99.99% of reactor problems you can solve. ठीक है? For R, if you have, you will write. You know the general mole balance equation. It is something like input is equal to output plus accumulation plus disappearance minus generation. R के लिए लिखना है तो मोलर रेट ऑफ R इन. अब यहाँ समझना, दो तरह से हम मोल बैलेंस लिख सकते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ. फर्स्ट, molar rate of R in V naught into CR naught, which is 0 in the given case. Molar rate of R out V naught into CR, because this is operating at a steady state. Accumulation is 0. Now, अब यहाँ अगर आप logically देखो, R is getting disappeared as well as appeared, because reaction क्या है मेरी? Reaction है A gives R gives S, K1, K2, order is 1, 1. तो R disappear भी हो रहा है, form भी हो रहा है. तो अगर आप separately लिखना चाहते हो, if you want to write that separately, तो disappearance of R is there in second step. It will be K2, properly लिखते हैं, molar rate of R disappeared minus DNR over DT. करेक्ट. और जनरेट भी हो रहा है इन फर्स्ट स्टेप, तो मोलर रेट ऑफ आर जनरेशन DNR over DT, है ना. तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, मोलर रेट ऑफ आर डिसअपियर विल बी, यू नो, जैसे हम लिखते थे माइनस आर ए इक्वल टू -1/V DNA/DT, इफ यू रिमेंबर. तरह लिखते थे ना. तो यहाँ से माइनस DNA/DT क्या आ जाता था आपका? -RA/V. Correct. Same here. Minus DNR/DT will be minus of RR into V. And what is minus RR? K1 CA into V. ये हो जाएगा टर्म. जब जनरेशन की बात करते हैं तो आपको ये भी याद होगा, आरबी को हम कैसे लिखते थे? RB was 1/V DNB/DT. So DNB/DT was used to be RB into V, है ना. RB की वैल्यू भी आप यहाँ लिख सकते हो, that will be K2 CR multiplied by volume. Correct. So that's how you can write them separately. No big deal. Okay. और अगर आपको एक साथ लिखना है, like based on the rate equation you have,
if you want to write, तो उस केस में भी आप लिख सकते हो. That is another method for R. Why? How? See, V naught into CR naught, outlet is V naught into CR, accumulation is 0. अब यहाँ देखो RR आपने क्या लिया था? You took RR equal to K1 CA minus K2 CR. Okay. Matlab this K2 CR is the disappearance term which you have already included in RR. And what is RR? Rate of reaction, or you can say rate of formation of R per unit volume. Correct? Or rate of reaction in terms of formation of R, whatever you like to say. वो हो जाएगा माइनस आर आर इंटू वी. सिंपल. माइनस ऑफ आर आर इंटू वी. वहां पे वैल्यू रख दो. तो वो आपकी चॉइस है हाउ यू वांट टू डू इट. बट द पॉइंट इज दैट एवरी टर्म वी विल इंक्लूड ओनली वंस. ठीक है. जो भी टर्म है उसे सिर्फ एक बार ही इंक्लूड करेंगे. अब उन्हें आप सेपरेटली करो लाइक दिस, और एक साथ लिखो लाइक दिस. ओके. तो अल्टीमेटली जो आपकी डिजाइन इक्वेशन है उसे अभी मैं ऐसे एक्सपेंड नहीं कर रहा, सॉरी, रहने दो, इसे अभी ऐसे ही लिख लेते हैं. तो यहाँ से आपका टॉ आ जाता है सी आर माइनस सी आर नॉट ओवर आर आर. So this is the design equation of MFR in terms of product. Okay. Anyways, तो यहाँ पे आई होप क्लियर है आप सभी को. तो R के लिए आपके पास वैल्यू आ गई, डिजाइन इक्वेशन आ गया. अब यहाँ पे आप अपना सी आर 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 की वैल्यू रिप्लेस कर दो डायरेक्टली, या फिर अगर आप वन बाय वन कर रहे हो तो भी कर सकते हो, डजेंट मैटर. क्योंकि ये जो V अपॉन V नॉट है वो तो टॉ बन जाएगा, है ना. तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपका सी आर इक्वल टू आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यू कैन ट्राई, K1 CA into tau divided by 1 plus tau K2. And if you put the value of CA, so CR will become K1 CA naught tau divided by 1 plus tau K1, 1 plus tau K2 for the given case. And you know what we have to do for CR max? DCR by D tau should be equal to 0. है ना? So you can differentiate this. CR, which is K1 CA naught tau divided by 1 plus tau K1, 1 plus tau K2 equal to, and put it equal to 0. So you know what will be the differentiation? U upon V denominator है. So you can put K1 CA naught, you can take out the outside the integration, it will become 0. और otherwise नहीं ले जाना, डायरेक्ट ऐसे लिख लो. And denominator as it is, differentiation of numerator, that is K1 CA naught, minus numerator as it is, differentiation of denominator. That will be 0 plus K1 plus K2 plus 2 times of tau K1 K2 divided by 1 plus tau K1 whole square, 1 plus tau K2 whole square. Now you can put all these things equal to 0 and solve. Okay, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. If you wish, you can try to solve that by yourself.
because I don't feel it is very difficult on solving. You will get tau max, or you can say tau optimum is equal to 1 upon square root of K1, K2. And when you put this value of tau max in the equation of CR, so you will get CR max is equal to CA naught divided by 1 plus K2 by K1 whole square power 0.5. Sorry, power 0.5 whole square. Simple. So I hope these things are clear. That's how you can do the things. Okay. Yes, target gate and bar. बहुत बढ़िया. So that's how, guys, we can write down the design equations for, we can do the designing of series reactions for plug flow reactor, batch reactor, as well as MFRs and PFR. अब यहाँ पे सीरीज रिएक्शन में और भी केसेस आते हैं आपके, वो आप लोग चेक कर सकते हो. तो मैं लिख देता हूँ सीरीज रिएक्शंस के केसेस. फर्स्ट, जनरली 4 ही केस हैं हमारे एज पर द सिलेबस. छोटा सा सिलेबस है हमारा 1-1. ये फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस इज A gives R, R gives S, rate constant is, order is 1-1, और यहाँ पे इन्होंने K1 इक्वल टू K2 ले लिया. Okay. K1 is equal to K2. थर्ड केस हो जाता है आपका A gives R, R gives S, order is 1 and 0. एंड फोर्थ केस हो जाता है आपका A gives R, R gives S, order is 0 and ये सब आप लोग खुद से चेक कर सकते हो, आई बिलीव. आपको क्या पता होना चाहिए इन सभी केसेस के लिए? यू शुड नो एटलीस्ट द काइनेटिक इक्वेशंस, the value of Tmax or Tmax, Tmax रखने का लॉजिक यही है, PFR एंड MFR. ठीक है, सेपरेटली उन्हें सॉल्व करना है. MFR के लिए भी, PFR के लिए. PFR तो बेसिकली काइनेटिक इक्वेशन से ही आ जाएगा आपका, बस टी की जगह टॉ कर देना, सिंपल. ओके. नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क एंड एवरीथिंग. सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस. थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं. Suppose it is given that for a series reaction,
operating in a reactor, what will be the maximum concentration of product B if Ca0 is equal to 10 मोल पर मीटर पर मोल पर लीटर? ठीक है, अब यहाँ पे आपके इस ऐसे हो सकते हो. फर्स्ट, reactor is MFR. Second, reactor is PFR. And third, reactor is batch reactor. Okay, so simple. From the reaction, you can see A gives R gives S. This is 0.4 second inverse. This is K2 0.2 second inverse. So it is obvious K1 is 0.4 second inverse. That means first order. Unit से clear है. K2 is 0.2 second inverse. That means this is also first order. है ना? अगर MFR में हो रही है फर्स्ट केस, तो यू नो टॉम एक्स विल बी इक्वल टू, जरूरत नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप टॉम एक्स निकाल सकते हो, बट आपसे सी बी मैक्स पूछा है, तो सी बी मैक्स विल बी वॉट, सी ए नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ K2 by K1 whole power. This was the equation K2 upon K1 power 0.5, और यू कैन से स्क्वायर रूट. यहाँ पे आप वैल्यूज रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो. तो सी ए नॉट इज 10, यहाँ पे गिवन है. स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 अपॉन 0.2, तो यू कैन सॉल्व दिस. तो यहाँ से आपका सी बी मैक्स आ जाएगा. क्या 1.716 मोल पर लीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, हो गया. और यही रिएक्शन अगर एम एफ आर में हो, पी एफ आर या बैच रिएक्टर में होती है, तो यू नो बैच रिएक्टर और पी एफ आर, तो आपका सी बी मैक्स होता है सी ए नॉट टाइम्स ऑफ K1 अपॉन K2 होल पावर K2 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1. तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो. K1 इज, एक सेकेंड, K2 बाय K1 था ना, ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. K1 is, K2 is 0.2, K1 is 0.4. तो ये आएगा 3.43 MFR के लिए. यस, और यहाँ पे K1 is 0.4, K2 is 0.2, होल पावर K2 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2 माइनस K1, K2 माइनस K1. ये आ जाता है यहाँ से 5.
तो अगर ये रिएक्शन आप एमएफआर में करते हो तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा 3.43 फॉर द गिवन डेटा। और अगर ये बैच रिएक्टर या पीएफआर में करते हो तो ये मिलेगा। तो कौन सा रिएक्टर हमें प्रेफर करना है? करेक्ट, रोमांस डॉम। क्या बात। For the given case, we will prefer PFR if it is continuous flow, and if it is batch, तो batch reactor। बैच ऑपरेशन है तो बैच रिएक्टर, कंटिन्यूस ऑपरेशन है तो पीएफआर। ठीक है, अब ये बात हमने करी भी थी कि एमएफआर सॉरी पीएफआर एंड बैच रिएक्टर एनालॉगस होते हैं, तो इसलिए अलग अलग उन्हें सॉल्व करने की नीड नहीं। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, है ना? दैट्स हाउ वी कैन डू द थिंग्स, सी हाउ इजी इट इज। ओके, अब इसमें जो बाकी केस हैं मैंने आपको बताए, एक बार उन्हें आप खुद से ट्राई कर लेना। उनकी काइनेटिक इक्वेशंस वैसे आप सभी को पता ही है, उन्हें क्या लिखना है। आपको एक उनकी काइनेटिक इक्वेशन याद करने की नीड नहीं है, उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, ज़्यादा बड़ा डील नहीं है। और उनका फाइनल वैल्यूज टी मैक्स एंड सी आर मैक्स पता है, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो उन्हें ड्राइव करना सीख लो। एंड इफ यू आफ्टर सम 2 or 3 प्रैक्टिस इट विल टेक नॉट मोर देन 2 or 2.5 minutes टू गेट टी मैक्स। ठीक है, बाकी अगर अभी मेरे पास इक्वेशंस है नहीं अवेलेबल, मैं उन्हें लिखने के मूड में भी नहीं हूँ, तो मैं कल आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में ये सभी की केसेस की काइनेटिक इक्वेशन और डिजाइन इक्वेशन अलग से शेयर कर दूंगा एक स्लाइड पर। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं लिखूं और वो टाइम खराब होगा, क्या फायदा। तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है गाइस आज। तो हमने सीरीज रिएक्शन और उसकी डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली। In next class, we will do the discussion on parallel reaction and their designing. Okay, which is very, very important. Again, I am repeating, this multiple reaction system is very important topic for your GATE exam point of view. अगर हम सीआरई में बात करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सिलेबस है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सीआरई हमारा ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। और अगर आप लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड देखो तो ऑलमोस्ट 13 मार्क्स तक का सीआरई भी आया है। वो हमने डिस्कस किया था फैक्ट्स के साथ। ठीक है, बट एनीवेज इन सब में अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स है। नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट 2 मार्क्स है। नॉन आइडियल रिएक्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट 2 मार्क्स है। हेट्रोजीनियस और एंजाइम रिएक्शन काइनेटिक्स का वेटेज भी ऑलमोस्ट 2 to 3 मार्क्स है। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ देखो तो 1 2 3 4 दीज 4 टॉपिक्स ओनली। एंजाइम रिएक्शन हेट्रो का ही पार्ट है, उसे अलग से लिखने की पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, बट वो हेट्रोजीनियस का ही पार्ट है, या फिर शायद टेबल को राइमिंग करनी थी इसलिए मैंने ऐसा करा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, एंजाइम एंड हेट्रो आर सेम, तो वो ऑलमोस्ट 2 or 3 मार्क्स की वेटेज है। क्योंकि इफ यू सी लास्ट टू कपल ऑफ ईयर्स तो दे हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट ऑन बोथ, वन ऑन एंजाइम वन ऑन हेट्रो। बट एनीवेज, तो ये आपका एक डिस्कशन है। ओके, तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। तो आगे अब हमारे जो भी डिस्कशन होंगे आज से लेके नेक्स्ट, वो सब आपके सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सीआरई के, इसलिए उनमें आपको जरूर अवेलेबल रहना है। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू। जाने से पहले आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अन अकेडमी पे हमारा एक ऑफर चल रहा है, स्पिन द व्हील। मे बी आपने वीडियोस भी देखी होंगी, हमने शेयर की थी, सभी एजुकेटर्स से इंफॉर्मेशन दिया था इसके बारे में। जहाँ पे आपको व्हील स्पिन करना है एंड यू हैव द चांस टू विन आईफोन्स, सम डिस्काउंट कूपन्स। ओके, 90%, 70%, फ्लैट 50%। ओके, मैकबुक, एक्सबॉक्स, स्मार्ट वॉचेस एंड ऑल। ठीक है, अन अकेडमी के मर्चेंडाइज भी आपको मिल सकते हैं।
और ये ऑफर आपका 27 अक्टूबर तक वैलिड है, सीआरई दिवाली उत्सव में। ओके, इसके अलावा हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है फॉर गेट 26 एंड 7। तो जो भी लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में अब आएंगे या हैं जो 26 या 27 गेट एग्जाम के लिए टारगेट करने वाले हैं, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी से प्रिपरेशन करनी है तो। आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है, अनअकैडमी का अपना कोड है उत्सव, और अदरवाइज यू कैन यूज द एजुकेटर कोड ACE009। इससे क्या बेनिफिट है, अगर आप एजुकेटर यूज कोड यूज करते हो तो यू विल हैव चांस टू गेट द पर्सनल गाइडेंस डायरेक्टली, ओके, फ्रॉम द एजुकेटर। इसके अलावा हमारा एक ऑफर ऑलरेडी चल रहा है क्रैश कोर्स के लिए, या फिर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु जस्ट वांट टू गिव अ फिनिशिंग टच टू देयर प्रिपरेशंस, दैट इज 3+1 मंथ सब्सक्रिप्शन, 4 मंथ सब्सक्रिप्शन ओनली एट अ प्राइस ऑफ 5499। ठीक है, जो अभी हमारा 55% डिस्काउंट के बाद है, तो यू गाइज कैन अवेल दैट इफ यू हैवेंट। और जो लोग 15 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं, मतलब 12 मंथ्स +3 एक्स्ट्रा, तो वो 15,000 का पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 14,999 का। यू जस्ट नीड टू यूज गो एंड सब्सक्राइब यूजिंग द कोड ACE009 एंड इन्फॉर्म अबाउट दैट कि सर आई एम अ प्लस स्टूडेंट नाउ ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, तो मिलते हैं गाइस। बाकी आपके जो डाउट हैं, सर इज इट वाइज टू स्किप हेट्रोजीनियस पार्ट ऑफ सीआरई टारगेट, यू आर स्टिल देयर, या फिर आपने अभी लॉग आउट तो नहीं किया है ना? आई वुड सजेस्ट हेट्रोजीनियस पार्ट को स्किप करना एक मिस्टेक होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of CRE. Why I am saying most important? Because it is also highly scoring. If you see last 4-5 years papers, तो you will realize कि आपको heterogeneous में उन्होंने direct question पूछे। Okay, direct मतलब if you know the concept, you can solve it. तो अगर आप हो तो मुझे just एक चीज बताओ, are you on Unacademy Plus? क्या आपके पास Unacademy Plus या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है? इफ यू आर तो आप, मैंने जो सीआरई कवर किया था कोर्स, उसमें हेट्रोजीनियस वाला पार्ट है, आप उसे एक बार वहां से कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 सेशंस है मैक्सिमम। ठीक है, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ द कोर्स, वहां पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा उसमें कौन से क्लासेस आपको करनी है। ओके, लास्ट की कितनी क्लासेस है मैं आपको बता भी देता हूँ, बता भी दूंगा। तो वहां से आप कर लेना, 2-2 आवर्स के सेशंस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 सेशंस हैं आई गेस, या 9 होंगे मैक्सिमम, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे ही 7-8 सेशंस ही हैं। यस, वहां पे लेक्चर नंबर 50 से स्टार्ट है, 11 सेशंस है। यस, 11 सेशंस है, तो आप वहां से कर सकते हो। 22 आवर्स का पार्ट है, डिटेल्ड कोर्स है ऑब्वियसली, बट इट इज गारंटीड आपको क्रैश कोर्स वगैरह करने की नीड नहीं है इस पार्ट के लिए, बिकॉज इट इज हाईली स्कोरिंग। जस्ट अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम लेक्चर नंबर 50 और 51, ऐसा ही कुछ है, मुझे याद नहीं है, वो आप चेक कर लेना। आई विल शेयर द लिंक ऑफ माई कोर्स, एंड इफ यू डोंट हैव द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बाय चांस, ठीक है, क्योंकि आपने बताया नहीं, इफ यू डोंट हैव द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय चांस, तो यू कैन टेक इट, एंड इफ यू डोंट वांट, और अगर वो ऑलरेडी नहीं है या आप किसी फ्रेंड से मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट लेट मी नो, आई विल
help you. Okay, I will give you the idea how you can do it. Okay, so that's all for the day, guys. I hope the things are clear. Target. बाकी आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे मेंशन भी कर देना, तो I will help you. Okay, that's all for the day, guys. See you in the next class tomorrow. Till then, bye bye. Take care. Tada. Have a great day ahead. Ciao.